Hello everyone, welcome to Target IAS. I am Chandan Sharma and I have recorded All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019 and also got selected in ONGC. So, in this lecture, we are going to cover some numericals on fins and some small topics on fin. Okay, so let's start. This is a question on pin fin. So I have written the given. So there is a pin fin whose diameter is 7 mm, length is 100 mm. The conductivity, thermal conductivity of the material is 350 watt per meter Kelvin. The base temperature is 200 degrees Celsius and the atmospheric temperature is 30 degrees Celsius, and the convective heat transfer coefficient of the atmosphere is 40 watt per meter Kelvin. Okay, so this is the question. We have to find the Q transfer. Very simple question and you can find it very easily. This is a means this type of question comes in GATE. Okay, so GATE में 2 मार्क्स के लिए आता है और काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है, बट फर्स्ट अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के सॉल्व कीजिए, बेसिक चीज़ें फॉलो कीजिए. ओके, ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन कन्वेंशनल मेथड. मीन्स कन्वेंशनल मेथड इज लाइक जब आप कोई बुक देखते हैं, ओके, वर्कबुक या कोई रेफरेंस बुक देखते हैं, सो उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है स्टेप वाइज, फर्स्ट राइट गिवन, देन ड्रॉ डायग्राम एंड देन राइट व्हाट यू हैव टू मीन्स फाइंड. फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एंड जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें आप शॉर्टकट ले सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. First of all, we have to draw a pin fin. Okay, so pin fin is drawn. This is the fin root and this is the tip, and there nothing is given. Okay, so nothing is given. So case 2, insulated tip, right? Nothing is given, then case 2, that is of insulated tip we will take. So T naught is 130, H is given 40 and length is 100 mm and T infinity is 30 degrees Celsius. We have to find Q. So we know the formula of Q, that is root under HPK T naught minus T infinity 10 H ml. So we have to first find M because everything is given. H is given, P is given, K is given, A is given, T naught, T infinity given, L is given. So we have to find M. M is root under HPKA. Okay, हमने पहले ही देख लिया था. So you have to remember this. ये हमेशा सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है और इसके अंदर काफ़ी सारे यूनिट की दिक्कत हो सकती है. So what is pin fin? So pin में pin is like a cylinder, so their perimeter is pi d and its area is pi by 4 d square. So h की वैल्यू 40 है, k की वैल्यू 350 and the value of p is pi d pi by 4 d square. So we will cut pi and 4 will come up and this d. So when you will solve this will come 9.56 and the unit of m is per meter. Okay, m raised to -1. So ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है. ओके, in 1 marks question, so please try to remember this. Unit is always important. Okay, when you go for the engineering services means or now IRMS, in this exam also means will be there. So unit is very important. Because of unit there are lot of problem. Okay, so now put the values in this equation. So when you put the value and solve it, you will get 8.294 watt. Okay, so ये आंसर है. प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन एंड whenever I am solving a question I have written the given, so at that time just stop the video, as per the given try to solve the question, and when you will get the final answer then start the video, then see how I have solved and then match the answer. Okay, and also match the steps. So now the next topic is fin efficiency. Okay, so what is the fin efficiency? Fin efficiency is the ratio of actual heat transfer taking place through fin to maximum heat transfer rate that can take place through fin when the entire surface temperature is at its roots or base temperature. Okay, so Qmax is possible. Qmax is when entire surface temperature of fin is equal to its root or base temperature. So first of all हमने देखा था कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर है T1, ओके, और T2 लेस है तो ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. एज के इंक्रीजेज दिस डिफरेंस डिक्रीजेज. ओके, सो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर रूट T नॉट है एंड यू हैव टू कीप द होल सरफेस ऑल्सो एट T नॉट द बेस टेम्परेचर, then the K of the material should be infinite. That is not possible, right? So but हम consider करते हैं कि this is a hypothetical situation कि K infinite है.
सो द होल सरफेस टेम्परेचर इज ऑल्सो इक्वल टू द बेस टेम्परेचर. सो वहाँ पर क्यू मैक्स क्या होगा, देन क्यू मैक्स विल बी एच एरिया इंटू टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी. और हेयर जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, एयर इसके एरिया क्या आएगा, पेरीमीटर इंटू लेंथ. सो एच पी इंटू एल टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी. सो फिन इफिशियंसी अगर मैं केस 2 के लिए फाइंड करूँ, केस 2 के लिए जो हमने केस 1 2 3 पढ़ा था, सो केस फॉर केस 2 दिस इज रूट अंडर एच पी के टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी 10 एच एम एल अपॉन एच पी एल टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी. So 10 HML upon ml. This is the formula of fin efficiency. 10 HML upon ml. So now you have to find efficiency for case 1 and case 3. Okay. So this is your task. Now, but as I have told you, we have taken the hypothetical situation that k tends to infinity. But in a practical situation, the best material we have is silver. So silver also having K of 400 watt per meter Kelvin. So this is not infinite. So the temperature difference between T and this tip temperature is less in Ag when we compare it with copper. Copper is around 385 and for the aluminium this will be the minimum. Okay. So ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है कि फिन इफिशियंसी का मतलब है. फिन इफिशियंसी इज there is a comparison between what is the Q actual or heat transfer rate taking place through fin and what is the maximum possible. We compare these two things. Okay, so fin efficiency is regarding that, and now you can derive the formula for all three, case 1 2 3, and this is a graph. Okay, so sometimes question asked on this graph also, so please draw this graph in your notes. Now केस 3 के लिए मैंने आपको बोलता केस 3 के लिए आ जाएगा 10 एच एम एल सी अपॉन एम एल सी. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिन इफेक्टिवनेस. फिन इफेक्टिवनेस इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द fin effectiveness is defined as the ratio between the heat transfer rate with fin and heat transfer rate without fin. So it is a comparison, like if you are not providing the fin, then there is some heat transfer through the surface, like in this area. If I am not providing the fin, then there is some heat transfer, and when I provide this fin in the same area, then what is the heat transfer rate. So एक चीज तो हमें पता चल गई कि E should be greater than 1. Okay, if E is less than 1, is it possible E is less than 1? No, because जो भी H होगा, जो भी Q होता है कन्वेक्टिव होता है H A delta T, right? So delta T will remain same, H will remain same, but here area increases. So E या तो इक्वल भी हो सकता है या 1 से तो बड़ा ही होगा. Okay, so sometime अगर पूछ लिया जाए कि fin effectiveness can be less than 1, so not possible. Okay, so अब यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं what is the heat transfer when we are applying the fin and what is the heat transfer when we are not providing the fin or without fin. So similarly for case 2, what is the Q of fin? Root under HPK T naught minus T infinity 10 H ml. Okay, this is a hyperbolic function. Now if we are not providing the fin and from the same, it means the area that we are taking here is the base area of this fin, right? So ये दोनों equal है. So Q without fin equals to HA T naught minus T infinity. Q without fin equals to HA T naught minus T infinity. So अब इनको compare करने के लिए just हम divide करेंगे. So you will get this fin effectiveness. Okay, this fin effectiveness, and this is important. इसके ऊपर काफ़ी बार question पूछे गए और इसका significance बहुत है. We will talk about its significance, but you have to remember this first of all. Okay, so आप इसको रट लीजिए और whatever you can do, write it 100 times or 200 times or solve 50 to 60 question on this. So you will remember this. Okay, so first of all इसका significance क्या है? Okay, effectiveness of fin tells us about percentage increase in the heat transfer rate. So it tells about the percentage increase, right? What is the, how you can see, say Q fin, right now what is the heat transfer rate, and if fin is not applied, then what is the heat transfer rate? So of course if you multiply it by 100, then it will give you the percentage, means how much percentage increase in the heat transfer rate. Okay, if fin is less, it is recommended do not use fin. Okay, if effectiveness of fin is less, then why we are using it? And providing fin is costly. It's not like if the component
price is 100 and if you provide the fin, its price will only increase by 1%. No, its price increases and it has a significant amount. So, और मेन थिंग, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड. ओके, सो प्रोडक्शन में जब आप जाएंगे तो प्रोडक्शन में छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है. एक नट भी अगर एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है, एक नट की कॉस्ट क्या होगी? अगर एक मशीन 1000 मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए की मशीन है और उसमें 2 रुपये का नट एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो लोग उसका भी ध्यान रखते हैं कि ये फालतू में 2 रुपये क्यों वेस्ट हो रहा है, जबकि उसका जो कॉस्ट है इस 1 लाख के पास बहुत कम है, सॉरी LAKH बहुत कम है. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. कॉस्ट बेनिफिट मेथड बहुत देखा जाता है, ओके, प्रोडक्शन में. सो दैट्स वाई इफ इफेक्टिवनेस ऑफ फिन इज लेस देन इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज द फिन. एंड ये जस्टिफाइड कब होता है? जब इफेक्टिवनेस ऑफ फिन इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 2. सो मिनिमम 100% इंक्रीज तो होना ही चाहिए. ओके, अब ये थ्योरेटिकल हो गया. नाउ मैंने आपको बोला था कि इफ यू सी फ्रॉम दिस हेयर, E fin is inversely proportional to convective heat transfer coefficient, right? So I can write it as E fin is inversely proportional to 1 by root under H. So that is why fin is always used when H is small. मैंने first starting में ही आपको बोला था in the previous lecture that wherever fin is used H is small. Okay, so because of that only जो हम यूज़ करते हैं फिन, वो एयर के साथ यूज़ करते हैं. वी आर नॉट यूजिंग इट विद द लिक्विड बिकॉज इन केस ऑफ द लिक्विड ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक, क्या H ज़्यादा होता है. ओके, द सेकेंड थिंग यू कैन सी दैट हेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑल्सो ई फिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर के. सो बिकॉज ऑफ दैट जो फिन मटेरियल है उसका के ज़्यादा होना चाहिए, सो इफेक्टिवनेस विल बी हाई. बट वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली सिल्वर. ओके, नहीं तो लोग इंजन ही उठा के लेके चले जाएंगे, गाड़ी से ज़्यादा महंगा तो इंजन ही हो जाएगा. सो इसलिए हम जनरली कॉपर यूज़ करते हैं बेस्ट और एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं. ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट ई फिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर पेरीमीटर अपॉन एरिया. सो यू कैन से ई फिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर. So to decrease the area, its thickness, this is the base area, right? So fin should be thin and closely placed. So if fin is thin, then the area of the base will be less, or the perimeter, अपने perimeter तो directly proportional है ही, तो area जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. So fin should be thin and closely spaced. Now अगर आपको number of fins find करने को बोल दिया जाए, number of fins, therefore total heat transfer rate required अपॉन हीट ट्रांसफर थ्रू वन फिन और ईच फिन. तो यहाँ से आप नंबर ऑफ फिन्स आते, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ फिन्स के ऊपर. ओके, सो लेट वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन रेक्टेंगुलर फिन. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर्मेट. इफ यू सॉल्व इट 2 to 3 times मीन्स दिस वन क्वेश्चन कंटेन अराउंड 10 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके गेट में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए आता है. ओके, सो इस क्वेश्चन को आप एक बार समझिए. Try to solve it by yourself. Okay, first listen what is given, what is the question. Okay, so first of all it is a question based on rectangular fin. So fin is rectangular, its length is 50 centimeter, width is 30 centimeter, thickness is 5 mm, T naught, the base temperature is 400 degree Celsius, thermal conductivity is 250 watt per meter Kelvin of the material, T naught is 30 degree Celsius, that is environment temperature, H heat transfer coefficient of the surrounding is 15 watt per meter square Kelvin. Heat loss from tip takes place. ये given है क्वेश्चन में, heat loss from tip takes place. So यहीं से पता चलेगा it is based on the case number 3. Okay, so now what we have to find? We have to find temperature at the rate 30 centimeter, means here length 50 centimeter है, उसमें x equals to 30 centimeter पर temperature क्या होगा, Q fin find करना है and efficiency of fin find करना है. So before solving this, let's visualize it. Okay, so there is a rectangular fin. Okay, have a habit to draw. ठीक है, do not just draw in your mind because the examiner does not see your mind, it will see your copy. This is T naught. Okay, this is some this is the tip, this is root, and at root T equals to T naught. Atmospheric temperature is T naught, T infinite.
and its convective heat transfer coefficient is H. This is L, this is W and this is T. ओके, सो ये गिवन है, अब हमको फाइंड करना है. ओके, फाइंड क्या क्या करना है? टेम्परेचर, दिस इज 50 सेंटीमीटर, राइट. सो एट सम 30 सेंटीमीटर यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? सो इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है? देन क्यू फिन, यहाँ से जो क्यू एंटर हो रहा है वो क्यू फिन क्या है? एंड जो इफिशिएंसी हमने पढ़ी, इफिशिएंसी ऑफ फिन, वो क्या है? ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है. वेरी सिंपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर एट द रेट x इक्वल्स टू 0.3 मीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.3 मीटर, 0.3 मीटर. So we know the formula T minus T infinity upon T naught minus T infinity equals to cos h m LC by LC minus x upon cos h m LC. So LC यहाँ पर corrected length है. So उस हमको m फाइंड करना पड़ेगा पहले. तो m फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप अगर फिन का कभी क्वेश्चन है, सो फर्स्ट हैव अ हैबिट टू फाइंड m. So m is root under hp upon k, root under. Okay, so just put the values here. Everything should be in meter. Okay. So 15 into 2 into 0.5 into 0.3, 250 into 0.3 into area. This is the base area. So you will get m equals to 8 and this is per meter. Okay, the unit is per meter. Now here LC, we have to also find LC because T, we have to find T infinity is given, T naught is given, m is given, LC we can find, x is given, x equals to 0.3 meter. Okay, so how we will find LC? LC equals to L into A. हमने देखा था जो कि ए अगर पिन फिन होता है तो d/4 हो जाता है. सो लेट्स सी कि रेक्टेंगुलर फिन के लिए क्या होता है. हमने पढ़ा था t/2 होता है, पर लेट्स सी फाइंड. सो ये जो सरफेस एरिया है इसको हमने क्या किया, इसको हमने बढ़ा दिया, राइट, इतना लेंथ से. सो लेट्स सी हाउ मच दिस लेंथ इज. दिस इज ए लेंथ. ओके, सो एरिया ऑफ टिप इक्वल्स टू एरिया ऑफ सरफेस एरिया, दिस सरफेस area. So area of tip is W, width into T thickness, and area of this surface is this perimeter into this area, right? So perimeter into T, perimeter is 2 into thickness into width, so into area. Now put the values, you will get A equals to 0.0024 something. So I have write it as 0.0025 meter. Now we can directly write it as W into 2 equals to 2 into T into W into A. We have to find A. Now with compared to W, T is very less, so I can write T plus W equals to W. So ये वाला टर्म और ये वाला टर्म डायरेक्टली कट हो जाएगा. So A equals to T/2. So this will be 0.0025 मीटर. तो LC हमारा क्या हो जाएगा? LC equals to L plus A. So this will come to 0.5025 meter. Now put all the values. You know the T naught, you know the T infinity, this is a hyperbolic function, you know the m value, now you know the all values. So you will get answer is 64.86 degrees Celsius. Okay, these type of question when come in numerical form in GATE, try to be very precise up to 2 decimal form. If you get like this 0.849, so write it 0.85. okay, or maybe you can write 849 because the answer will be 0.832, 0.87 or 0.86. so your answer should lie in this. So try to write very precisely and try to solve it very precisely. Now you have to find Q fin. Q fin we know root under HPK, T naught minus T infinity, 10 H M LC. Now we have everything. We know HPKA, T naught, T infinity, M and LC. Just write it. You will get 684.9 watt. Now you have to find the efficiency. Efficiency is 10 H MLC upon MLC. You have to just put the values. We have find the M, we find LC. So we found the LC. So just write it, and you will get efficiency is around 24.85 degrees Celsius. Now your one task is find effectiveness. Okay, and please write this in comment. So this is based on the fin. Now in the next lecture we will read about the unsteady state or transitional conduction heat transfer. Okay, so that is one topic, very small topic. In the next lecture we will cover that, and after that lecture we will start with a very important topic, that is heat exchanger, and that is just like a fin topic, and that is very important also. So just stay tuned with the Target IAS, and hopefully you are doing better with your preparation.
and try to revise things repeatedly, okay, because the revision is the key. जैसे इसी लेक्चर के बारे में अगर बोलो, if you haven't revised it after 2 to 3 days you will forget everything. So just try to revise things. Okay, take care and bye.